Hello students, welcome to your mathematics class. आमे last class रे derivative and its application देखी दिले. आमे वर्तमान एबे नुआ चैप्टर स्टार्ट करिवा. हमरो नुआ टॉपिक हला वेक्टर्स हिला. आमे वेक्टर एबे स्टार्ट करिवा. एटा आमे ऑलरेडी पढ़ी दिले मने अछि तमरो फर्स्ट ईयर रे फिजिक्स रे ऑलरेडी आमे पढ़ी दिले. तो सेठी जहा पढ़ी दिले ऑलमोस्ट से जिंस ही हमरो एबे अछि. हम जदी ठीक ठाक फिजिक्स रे पढ़िथिबा ताले हमकु एडवांटेज रहइबो. बड सहज टॉपिक अछि. एटा यूनिट 5 रे अछि. यूनिट 5 रे हमरो दीटा टॉपिक अछि. गोटे वेक्टर आ गोटे 3D. यूनिट 5 हमरो पांचटा यूनिट अछि. तो गोटे वेक्टर अछि एंड 3D अछि. तो हमरो जो 1 मार्क क्वेश्चन एथुर गोटे आसीबो 1 मार्क क्वेश्चन. एथुर 4 मार्क रो दीटा आसीबो. एथुर 4 मार्क रो तीनटा आसीबो. वी हैव टू आंसर. हमको तीनटा ही आंसर करियो पड़िबो. हेला ग्रे एथुरु 6 मार्क रो गोटे क्वेश्चन आसीबो. एथुरु 6 मार्क रो गोटे क्वेश्चन आसीबो. तो 6 into 1 is equal to हमरो टोटल 20 मार्क्स ए भलिया हमरो आसीबो. ओके, वन थिंग यू शुड रिमेंबर. इथि हमें जिंसो गोटे मन रखिया जे एथरो ए यूनिटटा सहज यूनिटटा एज कंपेयर विथ प्रीवियस यूनिट. एटा सहज यूनिटटा. तो सेति पई एथरो हमें जेमति हेले 20 रु 20 जेमति स्कोर करि परिबा से जिंसटा ध्यान दबा. ओके, नॉर्मली वेक्टर रु 3टा आसे, 3D रु 2टा आसे. जेतु एथरो चैप्टर स्किप अछि. वेक्टर रो जो 4th चैप्टर टा हमरो सिलेबस रे नाही, जो कटिंग हे जेछि 30%. तो सेति पई मु भाबुछि जे वेक्टर रु 4 मार्किया 2टा आसीबो, 3D रु 3टा आसीबो. तो ए 2टा हमें जेमति करि परिबा से जिंसटा चिंता करिबा. ओके, क्लियर. वर्तमान हमें जते बेले वेक्टर करिबा, वन थिंग यू शुड रिमेंबर. Okay, so there are two types of physical quantity as we know. What is scalar quantity, another is your vector quantity, right? So मागो लिखी दिए. एटरे टिके थ्योरी बढ़िया लागिबो फर्स्ट रे, then we have the problems. There are two types of physical quantity. Yeah, one scalar quantity and two vector quantity. Yeah, so scalar quantity रो definition लिखिबा. स्केलर क्वांटिटी कहले हमरो डेफिनेशन कोन? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. हमरो मन थिलो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, फॉर एग्जांपल है हमरो डिस्टेंस, टाइम, एरिया एटसेट्रा हैला. देन एटा हमरो विशेष किछि दरकार नै. काहे कि हमको कोन दरकार? हमको ओनली वी नीड द वेक्टर क्वांटिटी. ओके,
physical quantity which has both magnitude and direction ହେଲା दीटा जाक जार थिबो both magnitude as well as direction ताकू आमे कोन कहबा वेक्टर क्वांटिटी कहबा ओके एग्जांपल हमरो डिस्प्लेसमेंट तापर हमरो वेलोसिटी हैला acceleration etc okay so this is the difference between the हमरो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी रे आउ कोन वर्तमान हमें वेक्टर क्वांटिटी बुझा पड़िला वेक्टर क्वांटिटी रे हमरो आउ कोन रहिबो लेट वी हमें देखिबा होता ओके सो नॉर्मली हमरो जो वेक्टर क्वांटिटी अछि they are represented as suppose you have okay right तो बर्तमान हम देखिबा a vector quantity is represented as AB is represented as AB vector okay or suppose this is your AB it is V vector okay remember whenever you want to represent a vector quantity there will be an arrow mark towards the beginning जो terminal point से add को रहइबो एजी हमरो smallest letter जदी हमें represent करिबा तले small letter लिखि करी गोटे हमें लिखि परिबा so AB vector जहा vector B मध्य से जदि दीटा लेटर लिखिबा ताले ए बी कैपिटल लेटर लिखि करी तापर वेक्टर साइन दबा नहीं गोटे लेटर जदि लिखिबा ताले स्मॉल लेटर लिखि करी हमें वेक्टर साइन दे दबा ओके सो इन ए वेक्टर देयर आर सर्टेन हमें देखि दबा इन ए वेक्टर ए बी इन ए वेक्टर ए बी A is called the initial point and B is called the terminal point. A is called the initial point of the vector and B is called the terminal point of the vector. ହେଲା जदि वेक्टर टारो हमरो ए बी एमती साइन देले तो एटा बिगिनिंग पॉइंट ता बीटा एंडिंग पॉइंट ता ताकू इनिशियल पॉइंट कहंती शेषटा को हमें टर्मिनल पॉइंट बोली कहू हैला देन द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट द डायरेक्शन is always from initial point, initial to terminal point. ହେଲା initial point to terminal point आडको हमरो direction टा रहिबो. Okay, second, if u is equal to ab, if vector u is equal to ab vector, if u is equal to ab, then the magnitude u is represented, then the magnitude
u vector is represented by u which is equal to normally एमती लिखा जाए कि आमे खाली वेक्टर साइन जदि उड़े दबा ताले that will represent as a magnitude. गोटे जिनस ध्यान दियो वेक्टर चैप्टर जेते बेले आमे करूचे सेते बेले वेक्टर साइन टा दबाटा निहाती आवश्यक. जदि आमे वेक्टर साइन टा दबानी ताहले हमरो सेटा गोटे स्केलर क्वांटिटी हे जिवो. आमे भाबुतबा जे आमे पूरा प्रॉब्लम टा करिचे किंतु हमरो काई की कम मार्क आसिला तो जदि आमे सबु जाक वेक्टर साइन छाडी देथिबा ताहले हमरो निश्चित भाबे मार्क कटै देथिबे से हैला. तो whenever you need a vector sign सेति बेले आमे कोन करिवा ताको ये साइन देकरी छाड देबा. ओके क्लियर. ओके सो आमे नेक्स्ट पॉइंट असला in general the vector with same initial points are called as co-initial vectors. किसी हमें डेफिनेशन में लिखिवा जोटा कि हमें फ्यूचर रे हमको हेल्पफुल होबो. in general third point एटा हमरो the vectors with same initial point okay is called co-initial vectors. हैला co-initial vectors. Suppose there are two vectors with same initial point AB and AC. एटी AB vector अछि and AC दीटा जकरो initial point A. Initial point is A. Therefore vector AB and AC are called co-initial vectors. हैला जेते बेले भी दीटा जक वेक्टर रो इनिशियल पॉइंट गोटे थिबो ताको हमें कहबा co-initial vectors. हैला तो एठी co-initial vector कहले दीटा जक वेक्टर रो हमरो स्टार्टिंग पॉइंट बा इनिशियल पॉइंट ता समान थिबो. ओके नेक्स्ट आसला हमरो okay so this is your co-initial vectors. Then parallel vectors. हैला parallel vectors हला हमरो okay parallel vectors. तो एठी दीटा वेक्टर पैरेलल होबा पे there are two conditions. हैला so two vectors are said to be parallel if one vector is the scalar product of other vector. okay जदि दीटा वेक्टर अछि गोटे वेक्टर जदि आरो वेक्टर जदि हमरो कोन हेतिबो स्केलर प्रोडक्ट हेतिबो ताहाले हमें कह सपोज ए गोटे वेक्टर अछि रे आ 3 b अछि तो एटा 3 टा स्केलर प्रोडक्ट अछि. इट इंप्लाइज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर. हैला बुझिला जदि दीटा वेक्टर परस्पर पैरेलल होतिबे ताहाले गोटे आ गोटे रो स्केलर प्रोडक्ट होतिबे. ओके ए कंडीशन टा इन फ्यूचर रे गुडाए जगह रे हमरो यूज हो. राइट क्लियर. अच्छा नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमें देखुचे. फोर्थ हमरो फिफ्थ टा कोप्लानर वेक्टर्स.
coplanar vectors hela. So vector which lie on the same plane, vectors which lie on the same plane is called coplanar vector. गोटे प्लेन रहिले कोप्लानर बोली कहबा. सपोज एटा हमर जो बोर्ड अछि सेटा गोटे प्लेन अछि. ए प्लेन रे मु पांचटा वेक्टर रखिबी हैला. एटा ए, एटा बी, एटा सी, एटा डी, एटा वेक्टर ई. तो ये सब जाक गोटे प्लेन ऊपर अछंती. These are all coplanar vectors हैला. तो मोर देन वन प्लेन जेतेबेले पळे आसीबो 3D पळे आसीबो सेतेबेले गोटे प्लेन रे रही पारंती न रही पारंती. बट इन दिस केसेस हमरो एटा जेतु एटा 2D टा व्हाइट बोर्ड टा हमरो 2D टा सेति पे एक्से गोटे प्लेन रे रहबे. सो दीज आर ऑल कोप्लानर. तो जदी गोटे प्लेन रे रहबे दे आर ऑल कोप्लानर. आर आउटे डेफिनेशन अछि पैरेलल ऑफ वेक्टर्स लाइंग parallel to vectors lying on the same plane. और आउटे डेफिनेशन अछि parallel to vectors lying on the same plane. हैला. तो एटा भी तारो कोप्लानर रो डेफिनेशन हे परिबो. ओके क्लियर. देन सबको लिखि दबारे पिले हमें देखो सबु जाक लिखि दबा. लिखिकरी नोट रे रखिबा. रेगुलर अटेंड करिबा यूट्यूब क्लास. ओके जेतेबेला पर्यंत हमर ऑनलाइन क्लास आरंभ हेनी सेतिकी बेला पर्यंत हमकु यूट्यूब क्लास रेगुलरली करिया को पड़िबो. अदरवाइज हमें पछरे पड़ी जिबा. ओके आ रेगुलर क्लास आरंभ हो भाबी कि आमे जदी एटा मिस कर दबा ताले हमरो बहुत कम दिन रहिला एग्जाम. तो आमे पछरे पड़ी जिबा. ओके देन स्क्यू वेक्टर्स. ओके सो एठी हमें स्क्यू वेक्टर्स कहले वेक्टर व्हिच आर नॉट कोप्लानर दे आर स्क्यू वेक्टर्स. वेक्टर्स which are not coplanar they are called okay they are called skew vectors. okay so एटी as I told you मान करो एटा 2D तो छी मु कहली जे एटे जेतरा भी वेक्टर मु ड्रा करबी they are all coplanar हेबे. किंतु जेते बेले 3D आसी जीवो तीनटा हमर पळे आसीओ डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3. इन दैट केस सेतिकी बेले हमर वेक्टर टा जदी अलगा अलगा डायरेक्शन रे रहबे ताकू कोप्लानर कहबा नै. ताकू कोन कहबा हमें दैट विल नोन एज हमर कोन स्क्यू वेक्टर्स. ओके तो स्क्यू वेक्टर्स एक मार्क डेफिनेशन आसी पारे. ओके सो next like vectors. Two vector 7 number. Two vectors AB and CD. Two vectors CD and CE. AB and CD are said to be like vectors. Are said to be like vectors if they are unidirectional. Okay. Like vectors if they are unidirectional.
directional, or we can say they are of same direction. They are of same direction. दीटा वेक्टर रो समान जदि डायरेक्शन हबो गोटे डायरेक्शन रहिबे ताहले आमे ताको यूनि डायरेक्शन बोली कि कहबा. ओके, AB and CD, right? If they are of opposite direction, it AB टा हमरो line of support. Okay, if two vectors AB and CD, if two vectors AB and CD, okay, if two vectors AB and CD it a line of support बोली हम कहूची, AB and CD are opposite direction, then we say they are unlike vectors. Okay, then we say they are unlike vectors. जते बड़े हमरो डायरेक्शन ता तार अलगा अलगा हबो ताको हमें unlike vector बोली करी कहबा. Okay, then equal vectors. Equal vectors. जदि दीटा वेक्टर रो डायरेक्शन आउ मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम ताहले ताको हमें इक्वल वेक्टर बोली करी कहबा. वेक्टर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. Vectors with same magnitude and direction is called हमरा equal vectors. हैला बुझा पड़िला तुम मान को. सो इठी जते बळे हमें वेक्टर रो डेफिनेशन जाको देखुचे, वन थिंग यू शुड रिमेंबर, हमें चिंता करबा जे ए डेफिनेशन जाको सबु एक मार्क क्वेश्चन पई हमको दरकार. 1 मार्क गोटे वेक्टर रो आसुची तो आपको डेफिनेशन को रिलेटेड करिकरी ही आसुची. तो सेहिति पई हमें गोटे क्वेश्चन टाको जेमति हेले डेफिनेशन को रिलेटेड करिकरी भलो भाबे मन रखिबा, सो दैट हमरो नेक्स्ट आसिला हमरो जीरो वेक्टर बा नल वेक्टर हमरो हैला. नेक्स्ट आसिला हमरो कोन नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. ओके, एटा गोटे वर्ष आर डेफिनेशन आस्थिला गुडाए पिला आको भूल लिखि देले बिकॉज it is a conceptual vector, it is a conceptual vector. Okay, it is a conceptual vector whose magnitude is supposed, whose magnitude is supposed to be zero. Magnitude ta zero re hela, but the direction, it has indefinite direction. Okay, it has indefinite direction.
can say a vector eta or dekhi likhi doche with zero magnitude and arbitrary direction is called a zero or null vector. Okay, so a vector which magnitude zero जदि magnitude हला तार किसी value नहीं, as I told you it is just a conceptual vectors आरो किसी विशेष किसी माने you can say application हबो नहीं, but you can have a vector whose magnitude zero with arbitrary or infinite direction ହେଲା zero vector ହେଲା. next ଆସିଲା हमरो next हमरो unit vector. so unit vector रो बेसी किछि काम अछि हमरो माने गुडाए जिंस हमरो unit vector ऊपर निर्भर. ओके, unit vector এটা 12 नंबर 11 नंबर. a vector whose magnitude is equal to 1 or unity is called unit vector ହେଲା. जारो मैग्नीट्यूड a कहि दिबो ताको हमें यूनिट वेक्टर कहू. if a is a unit vector then it is represented by a cap. कौन बोली पढ़िबा a cap हिला. आमे गोटे जनरल वेक्टर को यूनिट वेक्टर रे भी एक्सप्रेस करि परिबा. तो सपोज a is a vector then a cap is equal to vector a divided by magnitude a. एटा हमको भविष्य रे काम रे आसीबो जते बेले जे कोनोसी वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस करिया को चाहबा ताहले हमें ए रकमर एक्सप्रेस करि परिया. ओके, कोन करि परिया वेक्टर a is equal to unit vector a is equal to हमरो वेक्टर a divided by its magnitude. ओके, क्लियर बुझा पड़ी गला वर्तमान राइट. तो जे कोनोसी वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर रे लिखि परिबा. नेक्स्ट आसला हमरो कोलिनियर वेक्टर. ओके, की वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहले हमरो गोटे लाइन रे रहिबे. यू कैन से टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. Two vectors are said to be collinear. Two vectors are said to be collinear if they are parallel with same initial point. If they are parallel with same initial point. जदि दीटा जाकर इनिशियल पॉइंट समान थिबो ताहले हमरो वेक्टर दीटा जाक पैरेलल हेबे. ओके, सॉरी कोलिनियर हेबे. पैरेलल भी होतो खाली इनिशियल पॉइंट देखो. सपोज एटा गोटे वेक्टर सपोज एटा ab एटा c. तो ab और ac दीटा जाक पैरेलल हेबे. ab पैरेलल टू ac हेबे
एंड दीटा जाकर इनिशियल पॉइंट गोटे अच्छी ताहले आमे ताको कौन कहबा कोलिनियर वेक्टर बोलकरी कहबा ओके इज दैट क्लियर राइट जदि आमे गोटे वेक्टर को एनी स्केलर क्वांटिटी k रे मल्टीप्लाई करिबा ताहले दैट विल बी अनदर वेक्टर लिबे लेता सब डेफिनेशन पर्पज रे अछि ओके सो आमे ए डेफिनेशन जाको भल भाबे मन रखिबा हमर जो नोट अछि नोटबुक रे लिखि दबा लिखि की ताको आमे रखिबा whenever it will be necessary सेतिक बेले आमे ताको अप्लाई करिबा ओके सो if multiplication of a vector by a scalar multiplication of a vector by a scalar गोटे वेक्टर को आमे जदि गोटे स्केलर क्वांटिटी रे मल्टीप्लाई करिबा ताले व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट राइट सो one thing you should remember let v is a vector and k is a scalar quantity let vector v is a vector and k is a scalar quantity माने हमरो constant रे scalar quantity माने it is just a constant okay then multiplication of the vector by the scalar k is a vector then multiplication of scalar quantity k vector by the scalar quantity k is a vector that is k v okay so k टा हमें जते बेले गुणीबा कांस्टेंट टा सेतिक बेले हमको गोटे वेक्टर क्वांटिटी मिलिबो सो इट विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर ओके जते बेले हमें मैग्नीट्यूड बाहर करिबा आरो मैग्नीट्यूड ऑफ के v वेक्टर के टा तो अलगा हमर कांस्टेंट क्वांटिटी टा एटार मॉडुलस हबो विथ v रो मॉडुलस हमें एटा कहबी हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मु कहबी नेक्स्ट क्लास रे तो हमें मैग्नीट्यूड टा तारो बाहर करि परिबा ओके सपोज हमें 0 गोटे गुणीबा गोटे वेक्टर को ओके सो इट विल बी ए 0 वेक्टर और null vector when you multiply a 0 to a vector it will be a null vector okay similarly if you have a 0 vector into a scalar quantity k okay null vector or a point vector it is infinite direction so this will also amaro right if k is equal to 0 then you will have a 0 vector okay suppose amaro ite magnitude is equal to 1 so v is an unit vector हैला तो एमती जदी लिखाई गला हमरो v हो कि u हो कि i हो तो एमानकर समस्तकर मैग्नीट्यूड is equal to amaro 1 हैला these are all unit vectors जारो ऊपर एक कैप रहिला they are all amaro unit vector हेबे से unit vector जाको amaro ए भलिया देखियो पई हबो ओके क्लियर बुझा पडिला तमन को so each one thing you should remember whenever you are doing a vector topic
तो सेतिकी बेले आमे जो लास्ट ईयर पढ़ी फिजिक्स रो हमरो जो नोट रे से सबु जाक आमे टिके जदि रिवाइज कर दबा तो हमको एडवांटेज रहइबो हैला सबु जाक आमे रिवाइज कर दबा जदि यू हैव एन एडवांटेज क्लियर तो सेति पई आमे कोन करबा भल भाबे फिजिक्स रो फर्स्ट ईयर रो नोट जाको काढी करी देखिबा नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आमे टिके प्रॉब्लमेटिक पार्ट को जीवा अब टिके हमरो थ्योरी अछि एडिशनल ऑफ वेक्टर्स हैला देन पोजीशन वेक्टर व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेक्टर टॉपिक सब बेले गोटे जिंस मने रख जे ए टॉपिक टारू आमे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करिया पे चेष्टा करिबा 20 आउट ऑफ 20 सो दैट आमे बाकी जदि कोटे टिके 19 20 हला ताले हमको एडवांटेज रहइबो यूनिट 1 एलपीपी एंड हमरो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यूनिट 2 हमरो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 20 20 हे गला यूनिट 5 3D वेक्टर 20 60 मार्क्स हे गला देन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन पूरा जो कैलकुलस पार्ट हमरो 40 मार्क्स अछि 40 मार्क रु आमे जेते अधिका मार्क्स आनिबा दैट विल बी एन एडवांटेज टू अस हमको टिके अधिका एडवांटेज रहइबो तो वन थिंग सब बेले मन रखिबो जे आमे भलो भाबे ताको मने रखिया को पड़िबो बड़ सहज अछि तीनटा चैप्टर अछि 12 रो ए 12 रो बी 12 रो सी जे एबीसी तीनटा जाको जदी आमे कंप्लीट कर दबा ताले हमको सहज रे हे जिवो बीसी बड़ सहज फर्स्ट चैप्टर टा टिके हमको डिफिकल्ट रहइबो फर्स्ट चैप्टर रु लॉन्ग क्वेश्चन आसीर चांसेस कम सेकंड किबा थर्ड चैप्टर रु क्वेश्चन आसीबो नॉर्मली फोर्थ चैप्टर रु लॉन्ग क्वेश्चन आसे फोर्थ चैप्टर टा जेहेतु हमरो एबे स्किप हे जाईची सेति में फोर्थ चैप्टर टा रु हमरो क्वेश्चन एबे आसीबो नाही केवल 2 1 3 ए भितरु आसीबो क्वेश्चन सेति पे हमें ताको भलो भाबे प्रैक्टिस करिबा सो दैट हमको फुल मार्क्स आसीबो हैला एतिरो तीनटा चैप्टर 3D रे भी तीनटा ही चैप्टर अछि 13A 13B 13C हैला तो एजा को टिके जदी भलो भाबे कर दोबा प्रैक्टिस ताहले हमरो भलो मार्क्स आसी जिवो ओके इज दैट क्लियर तो हमें एठी रखिबा आजिरो टॉपिक रे बाकी जो रहिला हमरो जिंस जाको हमें नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करिबा बाकी हमरो जो चैप्टर जोटा रहिला पार्ट टा ताको हमें कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके राइट थैंक यू हैव ए नाइस डे